Hi Bhavesh. You know, my nature is such that it is easy for anyone to take me for granted. People think, अरे यार इसको तो बुरा ही नहीं लगेगा. But that's just not the truth. I get to listen so many harsh things and rude things about me on my face, or I also end up feeling bad, and I also want to revert it. But since it's not my nature to say anything rude on the face, I end up saying nothing at all. But it kind of spoils the relationship also because then I take a back seat and I am not in that much great ease with that person. So how to make sure that these things does not happen to me, and how to make sure that these things don't spoil the relationship we have. So I just needed to know how to overcome this thing for not being taken for granted. Okay. So, naam nahi lete, but what I understand having listened to you are these points. There is this situation where people around you take you for granted and say nasty things on your face, maybe as a joke, but without realizing that how you feel about them. How bad do you feel when you listen to something like this? And just when you're about to be reverting back, responding back, कि अब तो मैं भी कुछ hurting बोल के रहूंगी, you realize you can't even do that, correct? अच्छा, you don't say anything back, but भूला भी नहीं जाता. You just cannot forget how hurtful that was. अब रिलेशनशिप में थोड़ी एक अनईजीनेस सी आ गई है क्योंकि इंसान सामने आता है तो ना तो गुस्सा किया जाता है और ना ही कुछ बोला जा सकता है, राइट? नाउ शी इज आस्किंग व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड सच सिचुएशंस एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन अगेन. How can you maintain a relationship while maintaining your self-respect at the same very time? चलिए, सबसे पहला question, what can you do to avoid such a situation from happening? Unfortunately, you can't. See, you don't have control outside your body or mind. People are just the way they are, situations are just the way they are, and there is a good enough reason for that. How about if I tell you this person is only trying to demean you, criticize you, mock you, so that they can somehow feel good about themselves? Most likely there is a past wound this person might have from their childhood, and most likely this person is only trying to validate themselves by bringing you down. मेक सेंस? भाई अगर मेरे अंदर की आवाज़ है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ या फिर मैं आई एम नॉट सो ब्यूटिफुल, मे बी आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, और इवन मे बी आई एम लेसर देन अदर्स, तो मैं क्या करूँगा? या फिर मेरा माइंड क्या कहेगा? मेरे माइंड में आखिरकार चल क्या रहा होगा? ट्रेल ऑफ थॉट्स. If I'm not that beautiful, people will leave me. I will not be invited or taken seriously. I may be considered ugly. How will I ever settle in a relationship? And let's say if I'm not intelligent enough, people will fool me, take me for granted. If I'm not at par with others, how will I survive in this nasty world? और यही उनके माइंड में भी चल रहा है. सो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है. उन लोगों को भी इस बात का पता नहीं है. देयर माइंड सेज दिस एंड दे हैव टू फॉलो, राइट? आपको नीचा दिखा के दे गेट अ सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन और दे गिव देमसेल्व्स अ वैलिडेशन कि देखो मेरे से ये इंसान और भी नीचे है, या आई एम बेटर ऑफ देन दिस पर्सन, ताकि माइंड किसी तरह से शांत हो सके ये कहने से कि सर्वाइव कैसे करेंगे. अगर आप बाकियों से कम हो, पीछे हो, या अगर आप में वो बात नहीं है जो बाकियों में है, तो आप कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे? यही उनका माइंड उन्हें बोलता रहता है. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट पर्सनल. प्रॉबेबली दे डोंट इवन केयर अबाउट यू. ये सारी बैटल इंटरनल हो रही है, बट बिकॉज दे कैनॉट हैंडल दिस इंटरनल बैटल, दे लुक टू फाइट इट आउट एक्सटर्नली, थिंकिंग शायद इससे शांति मिल जाएगी. Now, I'm not saying that they can say whatever they want. It's okay for them to be saying something like that. But जब आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में कितना बड़ा एक टोर्नेडो चल रहा है या कितना बड़ा एक वैक्यूम है जिसे वो फिल करने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचा दिखा के आपको थोड़ा सा ईजी लगने लग जाता है. एंड देन यू थिंक, नाउ आई नो, चलो ठीक है. So, coming back to the question, can you avoid such situations? No, you can't. Every person on this planet is fighting some battle or the other inside them. Everyone means everyone. कुछ लोग internalize कर लेते हैं और कुछ लोग बाहर निकाल देते हैं. किस किस को avoid करेंगे हम? But ये जानने के बाद आप better off हो, क्योंकि आपको इस बात की विजडम आ गई, आपको समझ में आ गया है कि चल क्या रहा है, करेक्ट? माई मॉम, व्हेन शी वॉज इन हर फर्स्ट जॉब, देयर वाज दिस पर्सन हु यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स एंड क्रिएट नास्टी सिचुएशंस. उसका नाम कुछ शायद मनोहर लाल या ऐसा कुछ था. सो माई मॉम वन डे गॉट फेड अप विद ऑल ऑफ दिस एंड वेंट टू हर सुपर बॉस सेइंग दैट कि भाई रेजिग्नेशन लेटर ले लो, अब बहुत हो गया. दैट बॉस सेड, मिसेस आहूजा, आई विल एक्सेप्ट योर लेटर, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. लाइफ में ऐसे बहुत सारे मनोहर लाल आते रहेंगे. आप कब तक रिजाइन करते रहोगे? माई मॉम कंटिन्यूज टू टेल दिस स्टोरी एवरी टाइम. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? People are just the way they are. That's you.
accepting creation rather than questioning or fighting it. You cannot stop the world, but you can change yourself in a way that you're more adaptive to situations, people. And how you're going to do that, I'm going to explain. Imagine you're sitting on a bench somewhere in a park, and across the road there is this car that passes by. Three things can happen that very moment. Scenario A, you don't know who's driving the car and the car goes by. You're not even bothered and you continue to enjoy the sunshine just like before. Scenario B, this person did something good to you, maybe some time back, helped you at the store, or not even that, just smiled at you while passing by in the mall. Now you see him or her drive by and you have a smile on your face. Arey, wow, this person. You might even wave or pass a smile. Scenario C, this person did not park their car correctly 2 days back, or his or her face resembles someone from your school who bullied you or made your life miserable. Now that immediate rush of hormones inside your body and you're filled with rage, of hatred, of uneasiness of sorts. In तीन situations में let me ask you an important question. इस इंसान के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये अच्छा है, ये बुरा? नहीं कह सकते, राइट? तीनों situations में आपका माइंड अलग अलग वेज में इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है. देखो, जब भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आपका माइंड सबसे पहले अपने डेटाबेस में जाके चेक करता है कि क्या मेरे पास ऐसी कोई फेमिलियर सिचुएशन है, क्या कोई ऐसा ड्रॉअर है जिसमें इसी तरह की कोई फाइल रखी हो. अगर है तो ये फाइल भी वहीं जानी चाहिए. इफ इट फाइंड्स इवन अ माइन्यूट रिजेंबलेंस, इट विल मैच इट अप विद द पास्ट एक्सपीरियंस कि पहले ऐसा हुआ था, इसका मतलब अब भी ऐसा होगा. पहले इस तरह से दिखने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो अब इस तरह से दिखने वाला इंसान दोबारा मेरे साथ ऐसा ही करेगा. अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं हमारा माइंड फिल्टर करके तो नहीं दिखा रहा इस एक्सपीरियंस को. एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं. मॉम बोलें कि कितना लेजी इंसान है, बुरा नहीं लगता. अरे यार मम्मा. और यही बात अगर बॉस कह दे कि कितना लेजी इंसान है, बहुत बुरा लगता है. यार मतलब आई वर्क सो हार्ड, ही इज अ ब्लडी शेमलेस. नाउ is the time to find out whether someone says you don't know how to dress up. One thing is that they want to feel good about themselves. See how well dressed I am. और दूसरा ये भी है कि कहीं मेरा माइंड तो पुराने किसी वूंड से इक्वेट तो नहीं कर रहा, पास्ट में कहीं कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ हो जिससे माइंड इक्वेट कर रहा हो इस एक्सपीरियंस से. एंड नाउ दिस पर्सन व्हाट दे आर सेइंग इज टेकिंग मी बैक टू दोज ओल्ड मेमोरीज, दोज ओल्ड इमोशंस. और अगर ऐसा है तो लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इफ दिस इज सो, कंसिडर दिस. It's universe in the form of this person who's trying to tell you what you need to fix within you. तो ये stage आती है acknowledgement की. Acknowledge that I also need to fix something within me. If I'm feeling angry, then there must be anger within me that I need to fix within. Universe has sent this person to make you realize that you still have anger within you, or frustration, or limited self-belief, or you could have resentment that you need to fix within you. अगर अंदर है तभी तो बाहर आ रहा है. These are sort of unresolved emotions which are lying within you. Next, she was asking how to continue a relationship. Sometimes it is important to keep that relationship even though we know that we have been hurt. Ultimate solution is express, communicate, converse. आप उस इंसान से कह सकते हो कि भाई I feel bad when you say certain things like this. I feel hurt. या फिर clearly that I am little too sensitive in this aspect and I'd appreciate if you use a different language instead, or don't say things like this at all. अब आपने क्या किया? आपने सामने वाले को बता दिया, तो कम से कम उसे ये पता तो चल गया, उसने नोटिस तो किया कि they might have been hurting you. Earlier, it is possible that they didn't even know that they're doing it. Let me tell you something. Intentionally, no one wants to do bad. But at times in the flow, मजाक में या फिर emotions के pressure में आके, they say things they don't mean. Or because of their internal battle, they might be reacting in a way that is way beyond their control. And so, you expressed correctly. And what happened was you released that unresolved emotion within you. You acted upon it. Emotions are supposed to be expressed. If you don't express, like you mentioned, कि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, these pent up emotions, suppressed emotions can create problems both in your mind and body. अगर बहुत ज्यादा इमोशंस दबे हों तो उन्हीं से डिजीजेस होती हैं, जिसे आप बोल सकते हो कि द बॉडी इज एट डिसईज, disease. Above everything and individually, you need to have that self-respect for yourself. Self-respect गुस्सा करने से नहीं आती है. But let's say किसी ने कहा कि you're not that smart, or maybe you don't know how to raise the kids. You tell yourself, this is their perception of you. This is not you. This is not your reality. And so, don't make it yours if someone says that. You do not want their world
to come into your world. If anyone watching this has a question and want to discuss their issue, do comment below and I'll try and answer in my best capability. And if you want to have a personal space in one-to-one session, my contact details would be there in the description below, so do reach out. Time is usually limited and I cannot take up all the cases, but you can ask here in the comment section and I'll try and answer. You could also share it with someone whom you think might be going through similar issues. If you do, that's the best way to say that you care. Subscribe and like if you'd like me to continue helping people. आज के लिए इतना ही. Until next time, stay blessed and stay happy.